Hello everyone, welcome to my channel Python AI Lab. My name is Namira Sheikh, and in today's video I'm going to explain you what are the decision making statements in Python. So let me start with these statements, why we need these statements, what are the use of this statement, how many statements, how many decision making statements we have in Python. So basically ये statements से क्या होता है, ये statements से हमें एक और एक से ज़्यादा ब्लॉक ऑफ कोड मिलते हैं जो हम वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सके अकॉर्डिंग टू आर स्पेसिफाइड कंडीशन। जो कंडीशन दी है हमें उसके बेस पे हम वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सपोज अगर हमारा कंडीशन एक जो भी कंडीशन है दिया हुआ है और दो ऑप्शंस दिए, दो ऑप्शन इट मीन्स दैट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स दिए हुए। अगर हमारा कंडीशन ट्रू करता है तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, if it is not true with our specified condition, then they provide us a option to go with the next or a second block of code. So this is the meaning or this is the function of this decision making statement. Decision make कर सकते हो आप according to your specified condition. So ये decision making statements के different चार statements हैं. There are four different decision making statements in Python. The very first is if statement, and the next is if else statement, the third is if elif else statement, and the last is nested if statement. So let me go with the very first, which is if statement. ये स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफाइड कंडीशन दी होगी। ओके, इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू देन यू कैन गो विद द ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। अगर आप वो स्टेटमेंट से वेरीफाई करते हो, if the condition is true, then your block of code is executed, otherwise it is not executed. Okay, this is the very simple, or here you got only one block of code. So let I take one of the examples so you can easily firstly I am going to create one variable here which is x, and and in this variable I am going to store my value which is 9. Okay, after that I am specifying my condition with if keyword. As you all remember that in our last video I have told you there are some reserved keywords and you have to be careful while making your variables. You not have to be make a use of this keyword. So if is used for this thing. So if statement is reserved keyword for the decision making. So let me go with the if, and here I'm specified my condition that x equals to 9. It means that अगर मेरा variable equals to 9 है तो and end with semicolon, because Python is case sensitive, and end with semicolon. यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया है, मैंने ये कंडीशन दिया है इफ के साथ कि अगर मेरा वेरिएबल इक्वल्स टू 9 है, मतलब उसमें वैल्यू 9 है, तो मैं प्रिंट करूंगी उसके नीचे वाला ब्लॉक विच इज print प्रिंट ट्रू वैल्यू के साथ। ओके, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड। अगर हमारा ये जो ऊपर का कंडीशन है इफ x इक्वल्स टू 9, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड जो ये होगा। एंड यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग हियर कि इफ के बाद आपको इंडेंटेशन और ये सब चीजें ध्यान रखनी। कंडीशन देने के बाद एंड होता है कंडीशन सेमीकोलन के साथ में। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड and you can see the output which is true. That's why they execute this block of code which is true. If I'm going to take this whole example but making a change in my value, so let us see the output. As you can see we didn't get anything because यहाँ पे बस इतना ही था। फर्स्ट स्टेटमेंट में इतना ही होता है कि एक स्पेसिफाइड
कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं. Okay, so I hope that you will get an idea about how you can make a use of if statement. Why we use a if statement if we have a one condition, and if we want that if that condition is true, then you have to execute that block of code. So it is all about the if statement. Let me go with our next statement, which is if else statement. if else statement में क्या होता है, यहाँ पर आप एक block of code रन कर सकते हो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो कि आप वो रन कर सकते हो. So let I take an example, then you can understood. Here also I have taken one of the variable, and under that I have store a value which is 9, and I am specifying the my condition, which is if x equals to 9, then end with semicolon, then writing the print statement where uh, true, and for the else part I am going to write else. इंटेंटेशन का ध्यान रखना है, इफ के बिल्कुल नीचे ही एल्स आता है, और एल्स भी सेमीकोलन पर खत्म होता है, एल्स के बाद सेमीकोलन, और एल्स के बाद हम जो नीचे कोड देंगे वहां पे print false. Okay, so what is happening in this code? I have given a one of the variable, and I have given the value to that variable, and my condition is if my variable is equals to 9, then this block of code is executed. If my variable x is not 9, then this block of code is going to be executed. So firstly, let's run this code. So I get the output which is true, because our variable x has a value 9, and in our specified condition में भी यही दिया है कि अगर 9 है तो ऊपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. एंड लेट वी चेक विथ else स्टेटमेंट. अगर हमारा x 92, ओके, अगर हमारा x 92 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमारा x 9 होना चाहिए, तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स या तो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा. सो हम लोग ने ऊपर वाला तो चेक कर लिया था कि हाँ ओके फाइन, आर x is 9, then this block of code is executed. But in this I have changed the value to 92, and the condition is specified that अगर x 9 है तो ही ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो नीचे एक ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है तो वो नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो लेट वी रन दिस एंड यू कैन सी द आउटपुट. यहाँ पे हमारा else वाला ब्लॉक जो है वो रन हुआ है, because we didn't have that specified condition true. So I hope you understood this also. if else statement, अगर ये ऑप्शन है तो ये, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट वाला, इस तरीके का स्टेटमेंट है if else statement. Okay, so let me come with our next statement, which is if elif else statement. यहाँ पे क्या होता है, they will allow you to test multiple condition and execute a different block of code based on first condition. फर्स्ट कंडीशन के बेस्ड पे यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन और डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो आप. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो कोड का जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है. So let I explain you this with the help of examples, so it was easy for you to understand what is if elif else statement. So I have taken this same as x equals to 9, and here firstly I am specifying my condition that if x is greater than 0 and with colon. यहाँ मैंने क्या कंडीशन दिया है कि मेरी x की वैल्यू अगर बड़ी है 0 से, ओके, एंड आई एम प्रिंटिंग माई ब्लॉक स्टेटमेंट विच इज x is positive. Okay, and
you have to be very careful about the indentation, so that's why elif. if के नीचे ही elif, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन दे रही हूँ कि x लेस देन 0 एंड विथ कोलन, यहाँ पे भी एलिफ था और अगर एल्स होता तो भी कोलन होने थे, एलिफ है देन ऑल्सो go with semicolon, end with semicolon after the condition. And here I am telling the code print x is negative. Okay, then the last is else, end with semicolon, print x is 0. Okay, so what is happening in this code? यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा वेरिएबल है जो 9 है, जहाँ पर 9 वैल्यू स्टोर्ड है। मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर मेरी x की वैल्यू बड़ी है 0 से, देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है। ओके, हमारी x की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो मैं यहाँ प्रिंट कर रही हूँ कि x इज पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो ये नेक्स्ट वैल्यू पे आएंगे। एलिफ, अगर x की वैल्यू छोटी है 0 से, इट मीन्स नेगेटिव में, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट में चले जाएगा, जो कि ये एल्स पार्ट है। सो लेट वी रन दिस कोड। x is positive because we come under the first condition, which is x is greater than 0. Suppose if I have taken here, suppose I have taken -9, ओके यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये पहले फर्स्ट कंडीशन से चेक करेगा x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, यहाँ पे वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। then they come to the next condition where they tell you अगर x is less than 0 या our x is less than 0 which is -9, so वो इसमें आएगा। okay, so let me run this. okay, x is negative and let me go with our next. if this is 0, so x is 0 यहाँ पे भी स्पेसिफाइड नहीं है, x is 0 यहाँ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो लास्ट का ही बचा, so x is 0. so as you can see with this if elif else से कितने मल्टीपल कंडीशंस जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट if elif else statement. Our next statement is nested if statement. nested if statement में क्या होता है, यहाँ पर if स्टेटमेंट के अंदर एक और if स्टेटमेंट होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज्ड होता है, बट as this is very new to you, I am taking a simple example for you to understand this statement. so as I have taken x as my variable and store the value 9 and specifying my first condition, which is if x is greater than or equals to 0. this is my first condition, ये कि मेरा x जो है वो बड़ा है और equals to है 0 में। and here this next condition is if x is equals to 0 and with colon, and here I am printing the statement that number is 0. This is the block of code for this statement, that if x equals to 0 then print 0. okay, and here I am giving the else part, that print number is positive. okay, and the last is else. I am printing number is negative.
So as you can see here, firstly I have given a one of the condition this, and under this condition I have given this condition. यहाँ पे देखो एक ही कंडीशन में दो चीज इन्वॉल्व है, ग्रेटर देन भी इक्वल्स टू भी. दैट्स वाई इफ एक और इफ लिया है जहाँ पे एक सेपरेटली डिफाइन किया है कि अगर x जीरो टू इक्वल्स टू सिर्फ जीरो अगर होता है तो ये कंडीशन ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो डायरेक्टली लास्ट वन विच इज नंबर इज नेगेटिव, this block of code is executed. So nested if statement is basically used for more complex decision making logic. यहाँ पे दो चीज explain की है, greater than and equals to. So that's why another if statement is used for making the problem easy. So that's it all about nested if statement. I hope you all understood everything related to decision making statement, all these four statements. And from the next video I will take some other questions based on this topic, decision making statements, so you will get a more idea about these statements. So that's it. Thank you for watching today's video. I hope you found informative. So that's it. See you in the next video. Subscribe my channel, and don't forget to turn on the notification bell icon so you can never miss my new uploaded video. Thank you.